होपफुली आप सब ठीक होंगे। ये एक बड़ी जो है नई डेवलपमेंट आई है लॉ में, जो जिसका तमाम वकीलों को इनफैक्ट पता होना चाहिए। जैसे हमारी सीपीसी की अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, डिफरेंट नए लॉज आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। उस तरीके से कमर्शियल लॉ नया आ गया। आपको इसका पता होगा कि मैंने रिसेंटली आई गेस कुछ 6-7 महीने पहले इसकी एक बड़ी अच्छी सेरेमनी हुई थी। चीफ से पाकिस्तान भी आए थे, मुझे उसमें सर्टिफिकेशन भी मिली थी। तो वो कमर्शियल कोर्ट्स में बड़ी जो है वो इस पे रिसर्च भी मैंने की, और इस पे हमने पढ़ा भी कि किस तरीके से इसका ऑर्डिनेंस और ये सारा तमाम चीज़ों में आपका जो है वो इसका आना चाहिए, और किस तरीके से कमर्शियल नेचर के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरीके से स्पीडीली हम लोग डिसाइड करवा सकें कि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या जो बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं वो उससे डिस्टर्ब ना हो, और वो इजीली उसको एक्सेसिबिलिटी उसकी इंक्रीज़ कर दें, ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, और उसको किस तरीके से वो एज सून एज़ पॉसिबल उसके डिसीजंस हों, ताकि कंपनीज़ को या जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको किसी किस्म का इशू ना हो। तो इससे रिलेटेड जो है वो ऑर्डिनेंस भी अब आ चुका है, जो इवेंचुअली लॉ में तब्दील हो जाएगा। ये मेरे पास पहुंच गया था, डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। मैंने इसको डिटेल्ड लुक अभी देनी है, तो हम व्हाई नॉट रीड इट टुगेदर। इसमें ये बेसिकली जो है पढ़ने वाली चीज़ है। अब आगे फ्यूचर में इसका काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, तो हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या। ये पंजाब गज़ट में शाया हुआ है लाहौर, ट्यूसडे अप्रैल 13 2021 में, मतलब इसी महीने ये छाया हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को हुआ है इसका। वही वाला तमाम द पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021 के तरह, मतलब के नाम से, और टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स इन द पंजाब। कमर्शियल कोर्ट्स पंजाब में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जजेस काम कर रहे हैं। इसका मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। Let's have a look at it. The commerce and trade are intrinsically linked with economic growth and prosperity of the people, and whereas expeditious ये मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में पहले आ चुका था, उसको देखा देखी हमने यहाँ पंजाब में इसको किया। इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं बीच में जो भी हम देखते हैं। Linked with economic growth and prosperity of the people, and whereas expeditious disposal of the claims arising from commercial transactions and resolution of commercial disputes is considered necessary for the uplift of commerce, trade, and ease of doing business. And whereas commerce, trade, and business matters require special expertise for their expeditious disposal of the establishment of the commercial courts shall facilitate investment in the country and provide speedy justice. And whereas Government of Punjab intends to provide an effective legal regime for early resolution of commercial disputes and expeditious disposal of commercial litigation of special value, and has decided to establish commercial courts for province of Punjab. And whereas Provincial Assembly of the Punjab is not in session, the Government of Punjab is satisfied the circumstances exist which render it necessary to take immediate action. Therefore, in exercise of the power conferred under Clause 1 of the Article 128 of Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Governor of the Punjab is pleased to make and promulgate the following ordinance. Assembly session में नहीं थी, इसलिए obviously जो ordinance है वो आता है naturally. And a short title, the ordinance as cited as the Punjab Commercial Courts Ordinance 2021. This ordinance extends to whole of Punjab. This ordinance shall come into force at once. Definition: Chief Justice means the Chief Justice of the Lahore High Court. Lahore Code means the Code of Civil Procedure, CPC 1908. Commercial courts mean a court established under this ordinance. Commercial dispute means any dispute. ये definition बहुत important है। Commercial disputes कौन से courts में जाएंगे, क्योंकि हर लिटिगेंट का जो ख्वाहिश होगी कि मैं इस कोर्ट्स में जाऊँ, कमर्शियल कोर्ट्स में स्पीडीली अपना डिसीजन कराऊँ, लेकिन कमर्शियल डिस्प्यूट किस कोर्ट्स में जाएंगे ये देखना ज़रूरी है। एनी डिस्प्यूट, क्लेम और काउंटर क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए, वेयर द वैल्यू ऑफ द क्लेम और काउंटर क्लेम इज़ 500,000 रुपीज़। 500,000 मतलब 5 लाख या ज़्यादा होगी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट 5 लाख है। और सच अदर वैल्यू एज अ गवर्नमेंट may notify related to or connected with any transaction or trade, business, or commerce, excluding sale or purchase of the immovable property between domestic companies or between a domestic company and a foreign company. अच्छा, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए, डोमेस्टिक बिटवीन डोमेस्टिक कंपनीज, दो कंपनीज के बीच में होना चाहिए, बिटवीन डोमेस्टिक एंड अ फॉरेन कंपनी वाला इसमें आता है।
और between the firms होना चाहिए, between a firm and a domestic और foreign company, और between a foreign company और between a domestic company, foreign company और a firm and a private person. मतलब प्राइवेट पर्सन का भी कंपनी के साथ बहुत इसका वाइड जो है एम्बेट है. ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप आते हैं तो 6 कैटेगरीज में तो आपका कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कंसिडर होगा. डिस्ट्रिक्ट मीन डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड अंडर पंजाब रेवेन्यू एक्ट. रेवेन्यू के डिस्ट्रिक्ट इसमें चलेंगे. डोमेस्टिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1913. ठीक है. फर्म मीन्स अ फर्म रजिस्टर्ड. ये उनकी डेफिनेशंस हैं. हाई कोर्ट मीन्स लॉ. हाई कोर्ट गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. रूल्स मीन रूल्स में made by the government under this ordinance. Secretariat means the secretariat established under ordinance. Registrar means the registrar of the secretariat. Prescribed means prescribed by the rules framed under the ordinance. And tribunal means the commercial appellate tribunal established under the ordinance. अच्छा इसमें commercial appellate tribunal भी बनेगा. The word an expression used and not defined in this ordinance but defined in the code and कानून शहादत और ठीक. Commercial courts हैं क्या? The government may by notification and official gazette establish as many commercial courts for the area comprising one or more districts as it considers necessary to exercise jurisdiction under this ordinance, and where it establishes more commercial courts than one, it shall specify the notification that territorial limits within which each of the commercial courts shall exercise jurisdiction. A commercial court shall 3 का subsection 2 पढ़ रहा हूँ. Commercial court shall hold sitting at such places within its territorial jurisdiction की बात है. The government shall in consultation with the chief justice appoint a person as judge of a commercial court if he is a district judge or an additional district judge. मतलब district judges या additional district judges जो हैं जब वो session judges रेवेन्यू का मामला देखते हैं तो उनको ये टर्मिनोलॉजी से बुलाते हैं तो ये इसमें बैठ सकते हैं. सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ऑनर कमर्शियल कोर्ट shall in exercise of its jurisdiction have all powers vested in civil courts under CPC. Civil courts के तमाम powers होंगे. That means they have hell a lot of powers. Subject to provision of this ordinance, all suits proceedings arising or connected with the commercial disputes shall heard inside the commercial court. Secretariat इसका बनेगा. The government shall in consultation with the chief justice establish a commercial court secretariat for purpose of this ordinance. Subject to the provisions of this ordinance, and the secretariat shall form the following function: to maintain all update, record and statistical data in physical and electronic form, to maintain case law repository, to arrange training and continuous education of judges. Any function addressed by chief law or the officer and staff secretary shall be appointed by the government. कंडीशन में ठीक है. रजिस्ट्रार इसका एक होगा. रजिस्ट्रार में द गवर्नमेंट शेल इन सेक्शन 5 में लिखा है गवर्नमेंट शेल in consultation with chief appoint a person as the registrar of secretariat for a period of 3 years if he is or has been or is qualified to be a district judge. Commercial courts का registrar जो है वो session judge level का होगा. That means the registrar of the law court law is also the senior most session judge registrar. Commercial courts का भी बड़ा powerful बड़ा एक influential बंदा होगा. Registrar shall be responsible for performance of function of the secretariat, and such function may be assigned to him by the government of application of the court subject to provision of the issuance of the service summons, notices, hearing, trial, disposal of a suit, and ordinance shall as nearly as possible be in accordance with procedure of the criminal law. CPC इसमें अप्लाई करेगी. स्पेशल लॉ में नॉर्मली नहीं करती लेकिन ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ अगर लिखा हो तो फिर आपकी अप्लाई करती है. Not withstanding the provision subsequent commercial court shall unless it's direct otherwise for recorded order any or other all facts of the proof to disprove affidavit. ठीक है. ठीक है. ये एप्लीकेशन को CPC के बाद applicability है. presentation and verification of plaint. Every suit under this ordinance shall be instituted by presentation of a plaint duly verified in accordance with the provision of this code. On presentation of the plaint before the issuing of the notice or summons, it shall be the duty of the commercial court to prima facie satisfy itself of the jurisdiction, cause of action and limitation through a speaking order. मतलब जो कोर्ट है उसने सेटिस्फाई करना है वही जिस तरह सिविल कोर्ट में होता है CPC के थ्रू. द प्लेन शेल बी कंपनीड विद the plaint shall be accompanied with such number of copies of plaint with all documents annexed therewith for each ठीक है with each defendant along with 2 additional copies. List of legal heirs of the plaintiff under order 7 rule 26 of the court. Complete list of witnesses and other affidavits containing gist of their testimonies. List of documents to be produced in real or relied upon by the plaintiff according to order 7 rule 14 of the court. Case management questions are as provided in form 14 in the appendix C of the court. CPC का जो appendix C वाला form भी लगना है और such documents as may be prescribed. On a plaint being presented to the commercial courts, the commercial court shall issue summons in accordance with section 10 of the
provided that no plaint shall be entertained. um, no plaint shall be entertained. मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि चार्जिंग भी इसकी कम हो रही है, तो I'll have to look into the charging too. इसमें जो है वो ये कमर्शियल कोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो चुका है बहुत हद तक, वो ये हैं कि इसमें एक तो स्पीडी मामला चल रहे हैं, और दूसरा ये कि जो इनका जो स्टाफ है दे आर प्रॉपरली पावर्ड थ्रू द ऑर्डिनेंस. ऐसा नहीं है कि इनका जो स्टाफ है वो टूथलेस बॉडी एक बना दी गई है. और दूसरा ये कि CPC की, क्योंकि इसमें CPC की चीज़ें यूज़ होती हैं. अच्छा, एनीवेज लेट्स गो बैक इनटू इट. अगर इसमें हम देखें तो ये लिखा हुआ है कि ऑन अ प्लेंट बीइंग प्रेजेंटेड टू द कमर्शियल कोर्ट, द कमर्शियल कोर्ट शैल इशू समन्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 10 ऑफ द ऑर्डिनेंस, provided that no plaint shall be entertained for hearing by the commercial if he does not fulfill the requirements of this ordinance. Leave to defend in any case in which the summons has been served or the defendant में हम इसको अगर यहाँ पे देख लें तो let's have a look into this. In any case in which the summons has been served, and the defendant shall not be entitled to defend suit unless he obtains leave from the commercial court as hereinafter provided to defend the same, and in default of his doing so, the allegation the fact the plaintiff shall be deemed to be admitted, and the commercial court may pass a decree for the plaintiff on the basis therefore or such other material. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. वो कहता है कि the allegations of in any case in which the summons has been served on the defendant shall not be entitled to defend the suit unless he obtains leave from the commercial court as hereinafter provided to defend the same. जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, and in default of his doing so, the allegations of fact in the plaint shall be deemed to be admitted, and the commercial court may pass a decree in favor of the plaintiff on the basis thereof or such other material as the commercial court may require in the interest. The defendant shall file the application for leave to defend within 30 days of the date of first service by the modes laid down in section 10. मोड वही है जो important आपको पता है कि जो लेटेस्ट आ चुके हैं CPC में भी. कहने पर लीव टू डिफेंड लेनी है, provided that where the service has been validly effected only through publication in newspaper, the commercial court may extend the time on the application. The application for leave to defend shall be in the form of written statement and shall contain a summary of the substantial question of law as well as in fact and respect. ठीक है, ये भी हो गया. The plaintiff shall be given an opportunity of filing a reply to the application for leave to, and after filing of the application for leave to defend, the commercial court shall within 15 days complete proceedings to prescribe under Article 10A Order 10A Rule 1 of the court. The commercial court, if it deems necessary for expeditious for the application for leave to defend or reasons for recording the written, shall be in its own motion have the power to summon official record with the maintained by the public authority in respect of animal. The commercial court shall grant the defendant leave to defend the suit if upon consideration of the contention of the plaintiff. I think in grant legal, the commercial court may impose such condition as it may deem appropriate, whether the application leave to defend is accepted. Commercial पहले उसने leave to defend की application accept करनी. Subsection 12 कहते हैं application for leave to defend shall duly verified in accordance with the provisions. Such document इसमें प्रोसीजर पे लिखा हुआ है CPC के साथ में. इन एडिशन हमने प्रोसीजर फॉलो करना है कमर्शियल कोर्ट्स का. सच नंबर ऑफ कॉपीज फॉर लीव टू डिफेंड विद सभी कंपनी में सच डॉक्यूमेंट को लीव टू डिफेंड विद द डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट देयर ईच प्लेंटिफ अलॉन्ग विद 2 additional copies. The list of legal heirs of the plaintiff, complete list of witness and their affidavits containing a gist of their testimony. ठीक है, ये भी हो गया. अच्छा, e-filing बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने भी देखा है कि हाई कोर्ट में इसकी e-filing सिस्टम आ चुका हुआ है. The government of in consultation with Jesus shall frame rules for filing the pleadings and written submissions and hearing of parties, including recording of evidence under this ordinance and all matters connected therewith or incidental thereto through electronic means. Commercial court secretary shall maintain a physical and electronic record of the case filed and pending before the commercial court along with detailed proceedings
that have taken place. They are in process of summon है. The summon shall be served simultaneously. ई फाइलिंग की जो इसकी प्रोसीडिंग्स है इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी हो चुकी है कि मैं आई वुड लाइक टू शो यू दिस. ये देखें कमर्शियल कोर्ट्स का, मैं यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट की हम वेबसाइट पे अगर जाएँ तो इनफैक्ट सेशन कोर्ट की वेबसाइट पे हम जाते हैं. सेशन कोर्ट लाहौर, इनकी अगर वेबसाइट पर जाएँ और इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे वेट आई एम कमिंग आई एम कमिंग वेट. Commercial courts, time to disposition, then obviously related to case management और commercial courts reports हैं. इसमें अगर हम देखें तो इनफैक्ट हाई कोर्ट में देखता हूँ, सेशन कोर्ट में मैंने देखा था नॉट लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं. इसमें जाके कमर्शियल कोर्ट्स की ये वाला कमर्शियल ओवरसीज सेल की अलग से फाइलिंग सिस्टम आ चुका होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये देखें कमर्शियल ओवरसीज कमर्शियल कोर्ट ऑब्जेक्टिव फॉर कमर्शियल कोर्ट्स एंड ओवरसीज, ये वाला तमाम इसमें ऑब्जेक्टिव है. इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, ये इनके जजेस हैं, रजिस्ट्रार साहब का नाम है. हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग इन्होंने मामला बना लिया और यहाँ पे फाइलिंग भी होती है. मैं यहाँ पे अगर ई फाइलिंग का जो सिस्टम है इसको ई फाइलिंग को क्लिक करता हूँ तो ई फाइलिंग में जाके ये आपसे लॉगिन डिटेल्स पूछेगा. अपनी लॉगिन डिटेल्स देते हैं तो आप अपनी प्लेंट को ऑनलाइन फाइल करते हैं यहाँ पे रादर देन गोइंग इनटू द प्रैक्टिकलिटी. जो जैसे हम सिविल का दावा करते हैं उसके ये सीपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बाहर के मुल्क बैठे बैठे भी कमर्शियल कोर्ट्स में ई फाइलिंग अप कर सकते हैं. तो ये ई फाइलिंग वाला काम मैंने आपको बताया हाई कोर्ट की वेबसाइट से थ्रू आता है. ये पहले भी देख के बड़ा फैसिनेट हुआ था. अभी सेक्शन 9 ई फाइलिंग ऑफ प्लीडिंग्स है. इसमें सेक्शन 9 के तहत ई फाइलिंग ऑफ सिस्टम बना. प्रोसेस ऑफ सर्वर लोकेशन, ये सेक्शन 10 का लोकेशन ऑफ बेलिफ फॉर प्रोसेस सर्वर सर्विंग समन शैल मॉनिटर पर मॉडर्न डिवाइस व्हाट्सएप के थ्रू उसकी लोकेशन मॉनिटर होगी. और आपकी सर्विस जो है जिस तरह होता है रूटीन में कि हम झूठ बोलते हैं जो क्लाइंट्स है कि हमें प्रोसेस हमें समन नहीं रिसीव हुआ, हमें ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, तो यहाँ पे उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया. डिस्पोजल ऑफ सूट से कमर्शियल डिस्पोजल ऑफ सूट ये इंपॉर्टेंट है. पेंडिंग बिफोर इट within a period of 108 within a period of 180 days 180 दिनों में इसका मुकदमे का फैसला करना है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच सूट. फॉर एक्सपेडिशन डिस्पोजल विद एनी अपील अंडर द ऑर्डिनेंस द कमर्शियल कोर्ट शैल नॉट ग्रांट अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स. तो जैसे ये उसमें भी होता है, लीगल डिस्पोजेशन में भी होता है. सेक्शन 4 सेक्शन का दावा जो उसमें करते हैं सेक्शन 7 का रिलीफ लेने के बाद, if the defendant fails to appear, the commercial court shall proceed to dispose of the suit on the basis of material before it. The commercial court deems him for expeditious ex parte proceedings भी हैं. इसमें 180 दिन में फैसला होना है, which is quite expeditious. Determination of costs, shall have full power to determine the cost of the suit by whom it is payable to give all necessary direction to regard fees and expense. Witness execution of decree भी होता है subject to the ordinance and the rules of the commercial court shall in the conduct of execution proceedings in respect of decree passed by section 14 of the ordinance as the case may be for the following, notwithstanding anything contained in the code or any other law for the time of being. The commercial court shall follow the summary procedure for purpose of investigation of claim and objection in respect of attachment or sale of any other property or maintenance execution. एग्रीमेंट की जैसे सीपीसी में होती है उस तरह की आप प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस है. मिनिमम लिमिट में बताया 5 लाख. ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस ऑल सूट्स एंड एग्जीक्यूशन पिटिशन कनेक्टेड विद अराइजिंग फ्रॉम commercial disputes pending in any court of origin civil jurisdiction shall stand transfer to the commercial courts. सिविल कोर्ट में जितने दावे इस कैटेगरी के पड़े हुए हैं वो तमाम कमर्शियल कोर्ट में ट्रांसफ़र होने के लिए एलिजिबल हैं. आप एप्लीकेशन देकर ट्रांसफ़र करा सकते हैं. ऑन ट्रांसफर ऑफ सूट्स एंड एग्जीक्यूशन पिटिशन सेक्शन कमर्शियल कोर्ट में प्रोसीड विद द case from the stage at which it was pending immediately before such transfer. It shall not be bound to rehear any witness और वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से रिज्यूम वहीं से हो जाएगा जहाँ से पॉज होगा. सिविल कोर्ट के दावे हो सकते हैं ऑन अपील एंड रिवीजन राइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर जजमेंट डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट पेंडिंग विद द कोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डर शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द ट्राइब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन. अच्छा, ये जब इसकी जो अपील या रिवीजन है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन इनके पास नहीं होगी बल्कि स्पेशल डेजिग्नेटेड जजेस हैं. लाहौर में इसके स्पेशल है. वेबसाइट पे आप जाके मैंने आपको दिखाई जहाँ पे ई फाइलिंग है वहाँ पे जजेस भी आप देख सकते हैं. कुछ एडिशनल सेशन जजेस हैं, कुछ सिविल जजेस भी हैं. आप उनकी जो रिविजन्स हैं दोज आर गोइंग टू बी ऑब्वियसली ये रिवीजन जो है ये एडिशनल के पास नहीं लगेंगी, ये लगेंगी कमर्शियल एपलेट ट्राइब्यूनल में. वो भी सेशन जजेस होंगे प्रॉब्ली.
लेट्स सी सेक्शन 15 डील करता है उस पर. द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिश एज मेनी ट्राइब्यूनल्स एज इट मे थिंक. A tribunal shall consist of chairperson and two members of the or have been or are qualified for appointment as a judge of high court to be appointed in consultation with the chief. अच्छा हाई कोर्ट के लेवल के जजेस या जो सेशन जजेस सीनियर होते हैं जो हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो इसके ट्राइब्यूनल में अपॉइंट होते हैं. जो सर्विस एपलेट ट्राइब्यूनल है जिसकी वजह से अपीलें रिवीजन वगैरह जाएंगी नीचे से अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस. फॉर एवरी सेटिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल द प्रेजेंस ऑफ चेयरपर्सन नॉट लेस देन वन मेंबर शैल बी नेसेसरी. और ये पूरा आपका जिस तरह सर्विस ट्राइब्यूनल होता है उस तरीके से ट्राइब्यूनल बनेगा जिसमें पूरा बेंच बैठेगा. डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल शैल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन of the majority. वही बोला demonstration not merely by reason of giants composition. ठीक है. No act or tribunal shall have be valid by reason only of the existence of a vacancy and defect the consultation of the tribunal. Appeals हैं इसकी subject to provision of the ordinance. uh, any section 3 appeals को deal करता है. provision any person aggrieved by the judgment decree of the commercial court or section 2 of section may file an appeal to the tribunal in accordance with the provision of the code. Within a period of 30 days में इसकी अपील होती है from the date of such judgment decree of the final order notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced. No appeal shall lie from any decree, judgment or order to commercial otherwise that in accordance with the section 3 the tribunal shall dispose of the appeal within 120 180 दिन. वो तो 120 दिन इसमें मजीद ऐड कर लें तो 300 दिनों में आपका फैसला फाइनल हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है. 3 में वो 120 दिन में इसका फैसला होगा. एनी ऑर्डर डिक्री जजमेंट पास ट्राइब्यूनल सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ एंड पब्लिक अकाउंट शैल बी अपीलेबल विदिन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर डिक्री. ऑल्टरनेटिव अच्छा एडीआर हैं फिर इसमें एडीआर को इनकरेज कर रही है गवर्नमेंट. हमने रिसेंटली देखा लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स है. एनी सूट और अपील रिलेटिंग टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट फाइल or pending in commercial court or tribunal as the case may be shall after leave to defend or appeal be accepted be referred uh, to ADR, commercial courts or tribunal court. Take the power of the High Court to issue direction. The High Court may not issue to the supplement provision of this or in the code insofar as provisions apply to hearing the commercial dispute as of a specified value and overriding affected provision. The ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therein contained in any other law for time being enforced and instrument having been no court other than a commercial court shall have exercise jurisdiction with respect to any matter to which the jurisdiction of commercial court extend under the ordinance. मतलब सिविल कोर्ट मामला चल रहे हैं उनकी जुरिस्डिक्शन खत्म हो चुकी है. उनकी जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट वालों को ट्रांसफर करा के they're liable to be transferred to the commercial courts ordinance. Commercial courts, yeah, obviously the tribunals if the case is of that category. Save as otherwise providing the provision of the Limitation Act and shall apply to all suits. ठीक है इसमें Limitation Act apply करता है. Finality of order subject to provision section 21. No court including shall have revise or review or call or permit to be called into question any proceeding, judgment, decree, sentence or order of a commercial court or the legality of a property of anything done or intended done by the commercial court. ठीक है finality order है. No court including the commercial court shall revise or review or call or permit to be called into question any proceeding, judgment, decree, sentence of order or a commercial court or the legality of or properly of anything done or intended to be done by the commercial court in exercise of jurisdiction under this ordinance, provided that the in commercial court may on record on application of any party and without notice of the party as the case may be both the parties correct any clerical, arithmetical, typographical mistakes any judgment. अच्छा खुद ही अपने ऑर्डर को ये करेक्ट कर सकता है मगर कोई और कोर्ट इसकी फाइनलिटी को चैलेंज नहीं करता. बट कमर्शियल कोर्ट इज the as powerful as any other court. Report the registrar shall present every 6 months a report of the implementation of this ordinance to the committee constituted by the Chief Justice. The committee consists of 2 judges of the High Court, Secretary of the Law Secretary, Secretary of the Government of Planning, Secretary of the Government Industries का होगा क्योंकि कमर्शियल मामलात हैं. बाकी सेक्रेटरीज का इनकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार हर 6 महीने बाद देगा कि इसकी ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है. पावर टू मेक रूल्स द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिसर में कैरिंग आउट प्रोविजन ऑर्डिनेंस. इसके कुछ रूल्स जो हैं आपको पता है लॉ तक रूल्स आते हैं जैसे सर्विस ट्राइब्यूनल के मैंने आपको बताया कि पहले इस ट्राइब्यूनल के रूल लॉ या फिर उसके तहत रूल्स बने फिर मैंने लैंड रेवेन्यू के बताए थे. उसी तरीके से इसका भी रूल्स आने हैं ये भी प्रोमलिगेट होंगे. अभी तो उसके ऑर्डिनेंस आया है इसको पहले एक्ट भी आ जाएगा. Removal of difficulties if any difficulty arising giving effect to any of the provisions of the ordinance. The government may by notification any official gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of the ordinance as it thinks fit for removing of such difficulty. ये
टिपिकल किस्म का स्टीरियोटिपिकल होता है। ये सेक्शन 23 सेक्शन हैं इसके, ये तमाम इसमें बताया। मोहम्मद सरवर के उन्होंने पंजाब के साइन है नीचे। 12/4/21 के बहादुर खान लॉ सेक्रेटरी के भी हैं। ये कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है जो हमारे पास इफेक्टिव 180 दिन में फैसला होता है। बड़ी इसकी एफिकेशियसली ये चीज़ों को करेगा। आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स encouraging foreign investment in पाकिस्तान और कमर्शियल डिस्प्यूट्स को स्पीडीली एक्सपीडिशियसली रिजॉल्व करने का। इट्स आई थिंक इट्स अ सोल्यूशन विच इज़ नो अल्टरनेटिव। और ADRs को भी इसमें इंकरेज किया गया। बड़ा अच्छा ऑर्डिनेंस है इसमें। इसको आई होप दैट टर्न्स आउट टू बी अ गुड एक्ट इन itself, और देन simultaneously it also government also promulgates रूल्स रिलेटेड टू द कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ताकि इसको फाइनलिटी मिले, चीज़ों को बेहतरी मिले। मैंने हाई कोर्ट का आपको बताया। इसमें सबसे मज़े का जो मैं समझता हूँ बात है फैसिनेटिंग, वो ये है कि ये जो कमर्शियल कोर्ट्स की तमाम चीज़ें ई फाइलिंग इसमें हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होने की कैपेसिटी है। इसकी फाइनलिटी है। सर्विस ट्राइब्यूनल काफ़ी अच्छे लेवल के बन गए, सर्विस ट्राइब्यूनल की तरह के इसके जो है कमर्शियल ट्राइब्यूनल्स, एपलेट ट्राइब्यूनल। और उसके बाद ये जो 23 का जो ऑर्डिनेंस है, 23 सेक्शंस का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये भी ना, दूसरा ये फाइलिंग है। फिर आपके हर डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेट हो चुके हैं पंजाब में जजेस के, कमर्शियल कोर्ट के जजेस हैं, जिन जिन के केसेस CPC के तहत अभी पेंडिंग है, सिविल मामला 5 लाख से ऊपर के, और उनकी कैटेगरी फॉल करती है जो मैंने आपको बताया इसके अंदर कमर्शियल डिस्प्यूट्स में फॉल करती है। वो लाइबल हैं टू बी ट्रांसफर टू द कमर्शियल कोर्ट्स। तो उनको एज सून एज पॉसिबल बुकला साहिबान करा दें, क्योंकि इन चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा फीस भी मिल जाती है कि आप लोगों को बताते हैं कि जल्दी होने के लिए हम कमर्शियल कोर्ट बनाते हैं, तो आपकी फ़ीस भी इससे बन जाती है। नहीं मुकदमे की जो आप अदरवाइज़ आपकी क्लाइंट से डिसाइड हुई है, इसकी भी आप कुछ बीच में फ़ीस ऐड कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दे के ट्रांसफ़र कराऊँगा, तो ये स्पीडीली आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। तो जो लोग राइट पे होंगे उसको सॉल्व कराना चाहेंगे, तो ये भी एक बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव स्टेप है। थैंक यू।